Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें कंपैरिजन ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन एंड द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या विषय पढ़ा ओके यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट या क्वेश्चन बहुत आसे सो वन बाय वन एबे हमें कंपेयर करी करी जिबा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ओके लेट अस सी हाउ द थ्री स्टैटिस्टिक्स show their behavior. So first property applies to the system of Maxwell-Boltzmann ray. It is applicable to the system of identical but distinguishable particle. Kintu Bose-Einstein ray, although it is identical but the particles are indistinguishable and same as in case of your Fermi-Dirac. Okay, किंतु difference है Bose-Einstein और Fermi-Dirac भितरे Bose-Einstein Pauli exclusion principle को obey करे नहीं, they do not obey. किंतु Fermi-Dirac रे it obey the Pauli exclusion principle. Okay, now the next property is the category of particle. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रे आमे याकू क्लासिकल पार्टिकल कहबा तापरे बोस आइंस्टाइन रे बोसॉन्स बोली कहबा फर्मी डिराक रे फर्मियंस बोली की कहबा 3 नंबर साइज ऑफ द फेज सेल हियर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रे वॉल्यूम ऑफ each phase cell can be made to approach zero even okay so even the molecules of a gas okay तमे याकू पाखापाखि जीरो आड़ को अप्रोच करे पारिबो तापरे बोस आइंस्टाइन रे हियर द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस सेल is equal to h cube where h is the Planck's constant. Similarly in case of your Fermi Dirac statistics okay but cannot be less than h cube. Now example है as I said molecules of a gas then एठी बोस आइंस्टाइन रे तमरो फोटोन ओके फोटोन इन ए कैविटी फोनोन तापरे फोनोन माने कोन एटा होची तमरो जते बेले गुटे इलास्टिक वाइब्रेशन होची तार क्वांटा को फोनोन बोली की कहा जाय ओके इन केस ऑफ योर सॉलिड तापरे लिक्विड हीलियम देन एटा लो टेम्परेचर रे आछी राइट तापरे फर्मी डिराक रे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल ए पर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इन ए स्टार ओके whose atoms have collapsed okay atom माने जहार collapsed करी जाइथिबे example like your white dwarf stars right तापरे properties of the particles Maxwell Boltzmann ray any spin it can take the particles far enough apart and so the wave function do not overlap into Bose Einstein ray spin integral रहिबो 0 1 2 dot 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 okay and the wave function are symmetrical okay to the interchange of the particle levels kintu Fermi Dirac ray they will have half integral spin like half 3 by 2 5 by 2 and the wave functions are antisymmetric so upon interchange of particles there will be a negative sign right now next point number of phase cells एठी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रे याको आमे बढे बढे इन्फिनिटी पर्यंत जाई परिबा किंतु फर्मी डिराक आ बोस आइंस्टाइन रे फाइनाइट रहिबो 7 नंबर रे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी this is simply the value ni factorial or n factorial then multiplication over I equal to 1 to k gi to the power ni divided by ni factorial किंतु एठी बोस आइंस्टाइन रे एटा चेंज हे गला summation I equal to 1 to the power summation ने multiplication I equal to 1 to the power your k then ni plus gi minus 1 factorial ni factorial into gi minus 1 factorial रे डिवाइड हे गला किंतु फर्मी डिराक रे कोन आछी I equal to 1 to k gi factorial by ni factorial into gi minus ni factorial okay तापरे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ni रो वैल्यू तीनटा जाक स्टैटिस्टिक्स रे देखो डिफरेंशिएट केमती करिबा एठी किछि भी नाही सेकंड टर्म डिनोमिनेटर एठी -1 आछी
एटी +1 आसुची. This is the main difference, right? The next point, next category होची number of available phase space cells. It is very large in case of your Maxwell Boltzmann, okay, as compared to the number of particles. So GI is very greater than NI. কিন্তু Bose Einstein ଆଉ Fermi Dirac रे it is nearly equal to NI. okay, now এই जो NI by GI এই ରେସିଓ କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅକୁପେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଏତିକି ଆସିଗଲା. ତାପରେ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ 0 କେଲଭିନ୍, 0 କେଲଭିନ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଦ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଏଚ୍ ପାର୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ବୋଲ୍ଟଜମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0. ଓକେ, ଆଉ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ରେ ବି यार वैल्यू 0, किंतु फर्मी डिराक रे ए एनर्जी इट इज नॉट 0, राइट. तापर मैक्रो स्टेट जदि देखिबा, macro state of a system can have more than one micro state. In case of Maxwell Boltzmann, each macro state has one micro state. Bose Einstein एठी मध्य each macro state consists of one micro state, right. तापर properties of distribution, properties of distribution कहले किसी भी लिमिट नहीं Maxwell Boltzmann रे to the number of particles per state. Now Bose Einstein रे भी no limit to the number of particles per state. Then distribution function your যদি Maxwell Boltzmann देखिबो लो एनर्जी रे ना approaches to the distribution function of your Maxwell Boltzmann at higher energy, किंतु restriction रहउची Fermi Dirac रे because of the Pauli exclusion principle. So not more than one particle per state can be occupied, right. So fewer particles per state, then the distribution function of your Maxwell Boltzmann at low energy, and it approaches to the distribution function of Maxwell Boltzmann at higher energy. Lastly, the type of statistics. Okay, the system which obey the laws of classical mechanics can be categorized under Maxwell Boltzmann, and the particles of the system which obeys the laws of quantum statistics are under Bose Einstein. Further, एठी मध्य सेही कथा जदि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ओबे करछि ताहले फर्मी डिराक माने दुईटा जाक सिमिलर रहउछि, किंतु डिसिमिलारिटी कोन, बोस आइंस्टाइन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करे नाही, फर्मी डिराक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करी थाए. ओके, सो अप टू दिस आई हैव टेकन द comparison between the Maxwell Boltzmann, Bose Einstein and the Fermi Dirac from one book. Now this I have taken from another book. Okay, you can read from this book also, same ही जिनसो लिखा हिची. Okay, एते किछि खास बेसी फरक नाही. Okay, so right, you can make your note accordingly. Finally, let us have a quick look on the difference between the classical and the quantum statistics. So the main points which are differentiating the classical and the quantum statistics are there. Number one, classical statistics is applicable to a system of identical particles which obey the laws of obviously classical mechanics, whereas quantum statistics re identical particle रहिबो किंतु it will obey the laws of quantum mechanics. Classical statistics रे particles are distinguishable, quantum रे indistinguishable. तापरे classical statistics रे volume elementary cell रो phase space रे okay can be made as small as possible. Okay, whereas quantum statistics रे यार fixed volume रहउची h cube. Okay, h हिगला Planck's constant, यार value एतिकी तमे जानि छ joules second रे. So in other words, the number of cells in the phase space can be made as large as we like in case of your classical statistics, but this is not the same in your quantum statistics. तापरे last point रे, the number of cells available in the phase space in classical statistics is very large as compared to the number of particles. So the occupation index Ni by Gi is very less than 1. ओके, এটা কোট জায়গায় ক্লাসিক্যাল রে, কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স যদি আমি দেখিবা কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স, number of cells available is approximately equal to the number of particles. So this occupation index Ni by Gi is equal to 1. Okay, so this is all about the comparison between the three statistics. Thank you.